Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We will start our sixth lecture of Plasma Physics 2, course code PHYS4131. Instructor name is Dr. Sayyid Awais Rauf. We will start our sixth lecture with topic collisions in fully ionized plasma. When the plasma is composed of ions and electrons, all collisions are Coulomb collisions between charged particles. However, there is a distinct difference between number 1 collisions between like particles, collisions between unlike particles. हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इनके दरमियान कोलिजन की बात करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ तो आयन आयन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स होंगे, लाइक पार्टिकल्स, और collisions between unlike particles will be like ion electron or electron ion collisions. So let's consider two identical particles that are colliding with each other. If it is a head-on collision, the particles emerge with their velocities reversed. They simply interchange their orbits as shown here, and the two guiding centers remain in the same place. We have here shift of guiding centers shown of two particles. These particles are like particles which make a 90-degree collision. The result will be the same as in a glancing collision, in which the trajectories are hardly disturbed. The worst that can happen is a 90-degree collision in which the velocities are changed 90 degrees in direction. The orbits after collision will then be dashed circles as shown in this diagram, and the guiding centers will have shifted. However, it is clear that the center of mass of the two guiding centers remains stationary. For this reason, particles between like the collisions between the like particles give rise to very little diffusion. As we said here, like particles के दरमियान जब collision होता है तो बहुत ही कम diffusion अराइज करती है. This situation is to be contrasted with the case of ions colliding with neutral atoms. अब अगर हम मिसाल ले लें कि आयंस जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं न्यूट्रल एटम के साथ, तो फिर क्या होगा? In that case, the final velocity of the neutral is of no concern and the ion random walks away from its initial position. In the case of ion-ion collisions, however, there is a detailed balance in each collision. For each ion that moves outward, there is another that moves inward as a result of the collision. मीन्स के हमारे पास आयन अगर मूव कर रहा आउटवर्ड, तो एज अ रिजल्ट देर इज अनदर पार्टिकल or ion that moves inward. So we can say that unlike particles collide and give rise to diffusion. अब अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स ऑपोजिट चार्ज के कोलाइड करेंगे तो फिर जो सिचुएशन होगी वो डिफरेंट होगी. अब अगर हम कहें कि
180 डिग्री कोलिजन हो रहा है, तो फिर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। We have shown here shift of guiding centers of two oppositely charged particles making a 180 degree collision. Unlike particle collisions give rise to diffusion, the physical picture is somewhat different for ions and electrons because of the disparity in mass. The electrons bounce off the nearly stationary ions and random walk in the usual fashion. The ions are slightly jostled in each collision and move about as a result of frequent bombardment by electrons. Nonetheless, because of the conservation of momentum in each collision, the rates of diffusion are the same for ions and electrons. As we can see in our diagram here, our next topic is प्लाज्मा रेजिस्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा रेजिस्टिविटी क्या होती है। द फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल collisions may be written as mn dv I over dt is equal to en into e plus vi cross b minus del pi minus del dot pi I plus capital P I e. Similarly, we can write for electrons, we have mn dve over dt is equal to minus en into e plus ve cross b minus del p minus del dot pi e plus pei. Here we have pie will be equal to minus pei. As the conservation of momentum requires, we can write P E I in terms of the collision frequency in the usual manner, and which is given by PEI is equal to mn Vi minus Ve into Vei, or we can write it as eta E square n square Vi minus Ve. From here we can write the velocity Vei is equal to ne square over m eta, the constant. Eta is the specific resistivity of the plasma. The symbol shown here is the proportionality constant, which we call the specific resistivity of the plasma. Next, we discuss the mechanics of Coulomb collision. When an electron collides with a neutral atom, अब हम कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड करे न्यूट्रल एटम के साथ, तो कोई भी फोर्स तब तक फील नहीं की जाएगी बाय द चार्जेस और एटम्स until the electron is close to the atom on the scale of atomic dimensions. The collisions will be like billiard ball collisions. हमारे पास जो collision होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे दो बिलियर्ड बॉल कोलाइड कर रही हैं। जब इलेक्ट्रॉन आयन के साथ कोलाइड करता है तो फिर इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है बाय द लॉन्ग रेंज कूलम फील्ड ऑफ द आयंस।
Nonetheless, one can derive an effective cross section for this kind of collision. It will suffice that to give an order of magnitude estimate of the cross section, an electron of velocity v approaches a fixed ion of charge E is shown here in diagram. Orbit of an electron making a Coulomb collision with an ion. In the absence of Coulomb forces, the electron would have a distance of closest approach r0. We call the impact parameter. In the presence of a Coulomb attraction, the electron will be deflected by an angle which is related to r0. The Coulomb force can be written as F is equal to minus E square over 4 pi epsilon naught r square or r0 square. We can see the change in momentum del mv, which will be written as approximately equal to mv, which is equivalent to the f delta t, and we have E square over 4 pi epsilon naught r naught square dot r naught over v. Then we get from here r naught the impact value of impact parameter, which is equal to E square over 4 pi epsilon naught mv square and from there we have sigma is equal to pi r naught square, and we can also write VEI is equal to n sigma v. ये फोर्स तब फील की जाएगी जब इलेक्ट्रॉन आयन की विसिनिटी में होगा, और ये टाइम जो है रफली हम लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू r naught over v. From here the change in the electron's momentum can be approximately written here as equation here. The first one, delta mv is equal to or approximately equal to f delta t, which will be equal to E square over 4 pi epsilon naught r naught square dot r naught over v. अब अगर हम क्रॉस सेक्शन फॉर लार्ज एंगल कोलिजन्स एस्टिमेट करना चाहें तो फिर हमें एंगल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री लेना पड़ेगा. अब अगर एंगल हमारे पास और द कोलिजन एंगल इज़ 90 डिग्री, the change in mv or momentum is of the order of mv itself. Thus we can write here from the above equation r naught equal to E square over 4 pi epsilon naught mv square. The cross section is then written as पाई आर नॉट स्क्वेयर. अब अगर यहाँ पे आर नॉट स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी e टू पावर 4 ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर m स्क्वेयर v टू पावर 4. द कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज VEI इज इक्वल टू n सिग्मा v, जो कि बराबर आएगी हमारे पास n e टू पावर 4 ओवर
16 pi epsilon naught square m square v to power 3. From here we will write the resistivity, और resistivity की वैल्यू हमारे पास आएगी ईटा इज इक्वल टू m ओवर n e स्क्वेयर वी ई आई, और अगर यहाँ पे वी ई आई की वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारे पास आ जाता है ई स्क्वेयर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एम वी टू पावर क्यूब। अब अगर हम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लें तो फिर हमारे पास वैल्यू रिप्लेस करने से वी स्क्वेयर की बाय के टी ई ओवर एम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट हो जाएगा, और जो रेजिस्टिविटी है वो बन जाएगी पाई ई स्क्वेयर एम टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वेयर के टी ई टू पावर 3/2 इफ़ कंसीडरिंग द स्मॉल एंगल कोलिजन्स। अब अगर स्मॉल एंगल कोलिजन कंसीडर करें तो फिर रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है वो चेंज होगा, पाई ई स्क्वेयर एम टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वेयर के टी टू पावर 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ गैमा। In practice, we have seen that due to long range of the Coulomb force, small angle collisions are much more frequent, and the cumulative effect of many small angle deflections turns out to be larger than the effect of large angle collisions. It is given here by this formula. We just multiply a factor of log gamma, where gamma is equal to lambda d over r naught bar, which is approximately or equal to 12 pi n lambda d to power 3. This factor represents the maximum impact parameter in units of r naught averaged over a Maxwellian distribution. मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर जो हम ले सकते हैं वो होगा लैम्डा डी, बिकॉज Debye shielding suppresses the Coulomb field at larger distances. Also, gamma depends on n and kTe. Its logarithm is insensitive to the exact values of the plasma parameters. Typical values of logarithm are given here in the table. It is evident that value of log varies only a factor of 2 as the plasma parameters range over many orders of magnitude. For most purposes, it will be sufficiently accurate to let Ln gamma equal to 10 regardless of the type of plasma involved. Next, we will see what is the physical meaning of resistivity. The physical meaning of resistivity or eta. For that, let's suppose that an electric field E exists in a plasma
and that the current that it derives is all carried by the electrons. हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वजह से जो करंट है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, which are much more mobile than the ions, and we know that electrons are more mobile than the ions. इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू आयंस. लेट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 0 and KTE is also 0, so that del dot PE dot is equal to 0. Then in steady state the electron equation of motion reduces En electric field is equal to PEI, since J is equal to ENVE माइनस VE. तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी या चेंज हो जाएगी. PEI इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ईटा ENJ और electric field E will be equal to eta J. This is simply Ohm's law, where eta is the specific resistivity as we discussed previously. There are many features which we'll discuss. First, eta or the specific resistivity is independent of density except for the weak dependence in log gamma. This is a rather surprising result. It means that if a field or the electric field is applied to the plasma, the current J as given above or in this equation E is equal to eta J is independent of the number of charge carriers. Then we can write the value of as we wrote the value of eta specific resistivity is equal to pi e square m to power 1 over 2 divided by 4 pi epsilon naught whole square kt e to power 3 over 2 log gamma. हमारे पास अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लाज्मा पर अप्लाई की है और करंट की वैल्यू जे है, तो फिर हमारे पास ईटा की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट होगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. The reason is that although J increases with Ne, the frictional drag against the ions increases with Ni. हमें पता है कि Ne जो है वो बराबर होता है Ni के, तो फिर ये दोनों इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. The Cullinan frequency VEI is indeed proportional to number of charge carriers n, but the factor n cancels out in resistivity. A fully ionized plasma behaves quite differently from a weakly ionized. In a weakly ionized plasma we have J is equal to
minus EnVe, which is equal to Ne mu E electric field E, so that J is equal to Ne mu E, since the value of mu E depends only on the density of neutrals. The current is proportional to the plasma density N. Also here, the specific resistivity is proportional to kT to power minus 3/2. जब हम प्लाज्मा को हीट करते हैं तो कूलम क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ करता है। कूलम क्रॉस सेक्शन के डिक्रीज़ करने की वजह से रेजिस्टिविटी की वैल्यू रैपिडली ड्रॉप करती है। Plasmas at thermonuclear temperatures are essentially Coulombless. Thermonuclear temperatures are around tens of kilo electron volt, are essentially Coulombless. This is the reason so much theoretical research is done on Coulombless plasmas. Of course, there must be always be some collisions, otherwise there would not be any fusion reactions. An easy way to heat a plasma is simply to pass a current through it. The I square R or J square eta losses then turn up as an increase in electron temperature. This is called ohmic heating. The plasma becomes such a good conductor at temperatures above 1 kilo electron volt that ohmic heating is a very slow process in that range. अब अगर टेम्परेचर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो प्लाज्मा जो है वो गुड कंडक्टर बन जाता है और हमारे पास जो ओहमिक हीटिंग है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। The fast electrons in the tail of the velocity distribution make very few collisions. The current is therefore carried mainly by these electrons rather than by the bulk of the electrons in the main body of the distribution. The cross section can be given as sigma is equal to pi r naught square. VEI is equal to n sigma V is equal to n e to power 4 divided by 16 pi epsilon naught square m square V to power 3. If an electric field is suddenly applied to a plasma, a phenomena known as electron runaway can occur. जब हम सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्लाज्मा पे तो एक फिनोमिना अकर करता है जिसे हम रनअवे कहते हैं। A few electrons which happen to be moving fast in the direction of minus E when the field is applied will have gained so much energy that they can make only a glancing collision. If electric field is large enough, the cross section falls so fast that these runaway electrons never make a collision. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लार्ज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना लार्ज कर दिया जाए अगर, तो फिर ये जो रन अवे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कोलिजन नहीं होगा। दे फॉर्म एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम
detached from the main body of the distribution. नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ ईटा क्या होंगी. एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ ईटा can be computed or calculated, but for that we take into account the ion recoil in each collision and are properly averaged over the electron distribution were first given by Spitzer. The following result for hydrogen is sometimes called the Spitzer resistivity, which is written as eta is equal to 5.2 into 10 raised to power minus 5 ln gamma over T to power 3 over 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओहम मीटर. अगर हमारे पास के टी की वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर हमारे पास जो ईटा की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 ओहम मीटर. This value can be compared with various metallic conductors. For example, copper have value of eta equal to 2 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Stainless steel have value of eta equal to 7 into 10 raised to power minus 7 ohm meter. Similarly, mercury has a value of 10 to power minus 6 ohm meter. Next is the summary of lecture number 6. We studied the collisions between fully ionized plasma and we also studied the plasma resistivity, which is given by or represented by eta. Then we studied the mechanics of collisions, as the collisions can be of two types because the plasma contains ions and electrons. We have collisions of like and unlike particles. In case of like particles, we have collisions of ion-ion or electron-electron collisions, और अनलाइक पार्टिकल्स के केस में हमारे पास जो collision होंगे वो आयन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आयन collisions होंगे. उसके बाद हमने फिज़िकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी देखा और रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ कैलकुलेट की. इन केस अगर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो वैल्यू ऑफ के टी ई, तो हमने स्पिट्ज़र रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की और उसको हमने कंपेयर किया मेटालिक कंडक्टर्स की वैल्यूज़ के साथ, लाइक कॉपर, स्टेनलेस स्टील, मरकरी, और देखा कि वैल्यूज़ जो है वो कितनी कम या ज़्यादा होती है डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर. These are the topics: collisions between fully ionized plasma, plasma resistivity, mechanics of Coulomb collisions, and the physical meaning of resistivity are discussed in this chapter or in this lecture number 6.